Everyone, in the last class we have completed the portion of the sale, and in today's class we are going to start the portion of the mortgage. That is the most important part of the transfer of the property act. So when we are talking about the concept of the mortgage, there are question arises like what do we understand when we are talking that there is a mortgage, right? So a mortgage is when someone gives a part of their ownership in specific immovable property, like it might be a land or building, to another person. That means, for example, I need up to the amount of 50,000 of the rupees, right? So I need 50,000 rupees as debt in an urgent basis, but I don't have sufficient money for that. Okay. So what can I do? I can ask you to pay me that certain amount of 50,000 of the rupees. So you are going to ask me that if I am going to pay you this 50,000 of the rupees, then what is the assurance? What is the guarantee that you are going to pay me back that particular money on a fixed basis? Then yes, I am going to give you the assurance that yes, I am mortgaging you my specific land or my any other property like my home, my land, my farmhouse, any movable property. I am giving this property as a mortgage, right? So hereby this property belongs to you have the partial right on the property from now on until and unless I pay back this mortgage money. And once I am done with the payment of this mortgage money, then after that you can recover. After that I can recover my property from you, right? जैसे कि अगर हिंदी में इसको अच्छी तरह से समझे तो फॉर एग्जाम्पल मेरे को 10 रुपया चाहिए और मेरे पास उतना पैसा है नहीं, तो मैं जाके आपको बोलूंगी कि मुझे आप 10 रुपया दे दो। तो आप मुझे बोलोगे कि अगर मैं तुम्हें 10 रुपया देती हूँ तो आप मुझे वो 10 रुपया सही टाइम से वापस करोगे, इसका क्या गारंटी है? देन आई एम टेलिंग यू कि ठीक है, अगर आपको इतना भरोसा नहीं हो रहा है कि मैं आपको सही टाइम से अपना 10 रुपया वापस कर दूंगी करके, तो आई एम गोइंग टू गिव यू माई वॉच। मेरा एक घड़ी है, मैं ये घड़ी आपको देती हूँ, और जब तक मैं आपको ये 10 रुपया आपका पेमेंट ना कर दिया ना, तब तक ये घड़ी आपके पास ही रहेगा। आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। जब ये मैं अपना जो 10 रुपया मैंने आपसे लिया है, जब इसका रीपेमेंट मैं कंप्लीट कर दूंगी, जब मैंने आपको वो पैसा सही ढंग से लौटा दूंगी, उसके बाद यू कैन टेक ओवर द प्रॉपर्टी फ्रॉम मी। उसके बाद मैं क्या कर सकती हूँ, आपसे मेरा जो घड़ी है वो वापस ले जाऊंगी। और अगर मैं आपको ये 10 रुपया सही टाइम से वापस नहीं कर पाई, तो आप ये घड़ी बेच के वो पैसा आपका असूल कर लेना। दिस इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ द मोर्गेज। जहाँ पे ये होता है कि अगर मेरे को कोई चीज चाहिए, मेरे को पैसा चाहिए, बट मेरे पास पैसा है नहीं, मैं अपना कोई इमोवेबल प्रॉपर्टी को बंधक में देती हूँ, मॉर्गेज में देती हूँ। किसके पास? किसी एक तीसरे इंसान के पास। और वो इंसान क्या करता है, मेरा जो इमोवेबल प्रॉपर्टी है उसको वो मॉर्गेज के तरफ से रखता है एंड मेरे को कुछ पैसा देता है। एंड देर इज ए टाइम लिमिट, जिस टाइम के अंदर मेरे को वो पैसा वापस करना होता है। अगर मैं सही टाइम पे वो पैसा वापस नहीं किया, देन उसका मेरा जो प्रॉपर्टी उसी के पास बंधक में लगा हुआ है, मर्गेज में लगा हुआ है, उसका राइट बन जाता है टू सेल द प्रॉपर्टी एंड टू गेन द बेनिफिट फ्रॉम दैट प्रॉपर्टी। So when we're talking about the definition of the mortgage, it exactly indicates under section 58 of the Transfer of the Property Act. And when we are talking about the concept of the mortgage, it is explained under chapter 4 of the Transfer of the Property Act, right? So TP Act 1882, it speaks about the various concept like the sale, gift. So similar way, the mortgage is a different concept from others, right? So when we're talking about this concept of the mortgage, then as we have understood in sale, what happens? There is the complete
ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी व्हेन देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द सेल। सेल में क्या होता है ना, आपका जो प्रॉपर्टी होता है ना, उसका कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी मेरा है, मैंने आपको अपना कोई प्रॉपर्टी है उसको बेच रही हूँ, उसको सेल कर रही हूँ। उसका मतलब ये होता है कि प्रॉपर्टी का जितना भी ओनरशिप है वो मेरे हाथ से जाके आपके पास चला जाता है। You become the new owner of the property once this ownership is being transferred। ओनरशिप ट्रांसफर होने के बाद प्रॉपर्टी का जो मालिकाना होता है, प्रॉपर्टी का जो ओनरशिप होता है, वो सेल में किसके पास चला जाता है? दूसरे ओनर के पास चला जाता है, मतलब टू द बायर। द पर्सन who gives or who transfers the ownership is called the seller, and the person who receives the ownership is called the buyer in exchange of certain amount of the consideration। मैंने उसके बदले आपको कुछ ना कुछ एज एन कंसिडरेशन पेमेंट करती ही हूँ। लाइक यू कैन से द मनी इज द मेजर फैक्टर ऑफ द कंसिडरेशन व्हेन इट कम्स अबाउट द कंसेप्ट ऑफ द सेल। अगर सेल का कंसेप्ट आता है तो वहां पे मेजर कंसिडरेशन जो होता है ना, वो क्या होता है? मनी होता है। जहां पे बायर ने सेलर को पैसा देके उससे कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी खरीदता है, परचेज करता है, एंड द पर्सन, द बायर बिकम्स द ओरिजिनल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी which he has received। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द गिफ्ट। गिफ्ट में ट्रांसफर हमेशा अनकंडीशनल ही होना चाहिए। So when we are talking about the concept of the gift, there is the concept that is being associated that the gift is the transfer of any movable or immovable property or transfer of the ownership of the movable or immovable property where there is immovable property without any consideration। So it is the major factor that when we are talking about the concept of the gift, गिफ्ट में ना आपका कोई कंसिडरेशन नहीं होता है। देर इज नो कंसिडरेशन इन गिफ्ट। अगर मैं किसी को कोई चीज दे रही हूँ एज ए गिफ्ट, देन उसके बदले में कुछ भी डिमांड करना सही नहीं है। आई कैन नॉट आस्क फॉर एनीथिंग इन रिटर्न व्हेन आई एम गिफ्टिंग समथिंग टू समबडी। गॉट इट? सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द गिफ्ट, जहाँ पे हमने ये पढ़ा कि अगर मैं किसी को कोई चीज गिफ्ट के तौर पे दे रही हूँ, देन मेरा ये ड्यूटी बनता है कि मैं उससे किसी भी तरह का कंसिडरेशन ना लूं या मुफ्त में उस इंसान को वो चीज सही ढंग से वापस कर दूं। राइट? अगर मैं मुफ्त में किसी चीज का ओनरशिप या किसी चीज का राइट्स दूसरे कोई इंसान को ट्रांसफर कर रही हूँ, दैट इज कॉल्ड द गिफ्ट। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वॉच है, मैं एक दूसरे इंसान को वॉच दे रही हूँ। देन यू आर आस्किंग मी दैट व्हाई यू आर गिविंग दिस वॉच टू द अनदर पर्सन। द आंसर इज बिकॉज दैट पर्सन इज माई बेस्ट फ्रेंड एंड आई एम गिफ्टिंग हिम दिस वॉच। So, am I taking any kind of the concession or consideration from that specific person to whom I am gifting? The answer is no. I don't have to. I don't have to pay compensation. So, when it is about like the giving something, or when it is about the transfer of the ownership, then it is called a gift when it happens without the consideration. And when the transfer of the property happens with consideration, it is called the sale। And the one other concept we have understood, that is called the exchange। जैसे कि हमने पढ़ा था when we are doing a sale, वहां पे क्या होता है? सेल ऑफ द इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी। वहां पे अगर आप मेरे को 5 रुपए देते हैं, देन आई रिटर्न यू 500 ऑफ द 5 रुपीज। अगर आप मुझे 5 रुपया दे रहे हो तो मैं आपको जो भी सामान चाहिए, मैं 5 रुपया का ही सामान आपको दे सकती हूँ।
दैट इज कॉल्ड द सेल, जहां पे मैं अपना सामान बेचता हूँ। एंड इन रिटर्न मेरे को आपको जितना चीज देना चाहिए मैं उतना चीज भी दे रही हूँ, राइट? सो when we are talking about the concept of the mortgage, the definition of the mortgage, it exactly speaks that a mortgage is when someone gives a part of their life, uh, a part of their ownership in specific immovable property, like mortgagor or building, to another person as a security for a loan or money that is being borrowed for the future loan. Then second point, a debt, money owed. Or third, a promise that may involve financial liability. Number four, the person giving the property interest in the mortgagor. Number five, the person receiving the mortgage. Number six, the money secured, loan plus interest is the mortgage money. Then the last point is the document for the thirds, but this reaction is the mortgage deed, right? So when we're talking about the concept of the mortgage under section 58, there are certain things that need to be taken care of. The first point is, what is the basic definition of the mortgage, right? That I have got. So when the definition of the mortgage speaks that a mortgage is when someone gives a part of their ownership in specific. When a mortgage passes her ownership in specific immovable property, a mother, then like land or building, to another person for the security. Got it? Okay. So when we're talking about the mortgage, then we have already understood that mortgage is about the partial transfer of the ownership of a specific immovable property. What did I say? Mortgage is the partial transfer of the ownership of immovable property, right? So why do we call it as the partial transfer? Because that cannot be the full on transfer. Got it? So in the different concept, we are going to discuss how many kinds of mortgages are existing. Okay, so there are various kind of mortgages that are existing in nature. The first one is a loan or money borrowed or a future loan. Okay, the second mortgage is a debt, that is money owed. The third mortgage is a promise that may involve the financial liability. Then fourth, the person giving the property interest in a mortgager. Then the money does not secure, ban plus interest हो गया. Then uh, then the last one is the document is the transaction is the mortgage deed. Okay. So what are the properties or what are the things that can be considered as a secured mortgage? इसका मतलब ये है कि ऐसा कौन सा चीज है जिसी को मोर्गेज के तरीके से दिया जा सकता है. पहला बात है, ए मोर्गेजर व्हेन समवन्स गिव्स gives a part of the definition. Okay, when someone gives a part of the ownership specific definition, like land or building, to another person as a security. The first point is a loan, money borrowed, or a future loan. For example, I want to take 20 lakh of the rupees from you. Okay. So there is an agreement between you and me that I am going to take 20,000 of the rupees, and then I then I can loan for a future loan also, as for a current loan also. Okay. So what do you mean by the current loan and the future loan? As I was giving an example, for example, I want 3 lakh of the rupees as an urgent basis.
That is called the current loan. When I am asking the front person to pay me currently. Okay. Then the second is called the specific immovable property. That means that is a like bond, and in this situation this is not possible, right? So when I'm talking about the future loan, that means, for example, I know that after the duration of the 6 month, after the duration of the 6 month, I am going to build a house, right? So there is something that I am going to a broker who will pay me the mortgage. I'm telling him my situation and I'm telling him that I need the loan amount up to this much rupees. So are you agreeing to get pay me? That person is saying that okay, fine, I am ready to pay you the loan. And then we have a fixed amount that the person, the mortgagee is going to pay me the amount up to 30,000 or 40,000 rupees. That is the amount I require from February 1 onwards. That is called the future loan, where there is a planning in future that yes, on this date I need this amount of this much amount. So are you going to pay me? This is called the future loan. Okay. So a loan is called the money borrowed or the future loan. So in that case, you can put a mortgage. For example, as a mortgage, I as a person, as a debt, you are paying me 50,000 of the rupees. Okay. In return, I have mortgaged my one of the home near you. मैं अपना एक घर जो है वो mortgage पे बंधक रखा है कि अगर आप मुझे अपना 50,000 रुपीज नहीं चुकाया, देन क्या होगा? देन यू हैव टू, if you are not going to pay me this 50,000 of the rupees, then this home of mine, this house of mine, I am putting as a mortgage, and you have all rights to, and you have all the rights to sell the house and to recover the money afterwards. Okay, so this is the primary thing we discussed. The second thing about the debt. For example, there is not much difference between the borrowing money and the lending money, right? So debt is, for example, I have, I owe you 30,000 of the rupees, or I have given you 30,000 of the rupees 2 years back. That is called a debt, where you have taken certain amount of money from me on a long back. So in that situation also, you can mortgage your any of the property near me, and you can promise me that you are going to pay back the rest of the debt amount in a specific time period. And if you are unable to pay that, then I have all rights to recover the specific amount of the property from you in any other manner. Then the third point, it speaks about a promise that may involve the financial liability. That means any kind of the promise that might involve the financial liability. For example, I just take another example of this. मान लो कि one of there is my son. Okay, my son has entered into a business. मेरा जो बेटा है वो एक बिजनेस में एंटर कर रहा है. तो देयर इज ए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन मी एंड माई सन. मैंने अपने बेटे को वादा किया है कि तू जब बिजनेस शुरू करेगा ना, तेरा बिजनेस पे शुरुआत में जितना भी इन्वेस्टमेंट होगा, वो इन्वेस्टमेंट अगर तू सही ढंग से नहीं कर पाया तो मैं कर दूंगी, राइट? सो व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड द फाइनेंशियल लायबिलिटी. जहां पे मैंने अपने बेटे को वादा किया है कि अगर उसका बिजनेस सही ढंग से वो अपना इन्वेस्टमेंट को संभाल नहीं पाता, then I will be the one who is going to invest for him. So in this situation also, I can do the mortgage of the property. मेरा एक जमीन है, मेरा एक लैंड है, मेरा एक घर है, मैं उसको आपके पास mortgage पे दे दूंगी. एंड इन रिटर्न आई विल एक्सपेक्ट कि अगर मेरा बेटा सही टाइम से बिजनेस नहीं कर पाता है, पैसा इकट्ठा नहीं कर पाता है, उसको पैसा चाहिए होता है, देन आई डोंट हैव सफिशिएंट मनी टू पे फॉर हिम. तो मैं किसके पास आऊंगी? आपके पास आऊंगी. यू हु आर यू? यू आर द मोर्गेजी. आई एम द मोर्गेजर. मैंने आपको अपना जो घर है या जमीन है, मैंने आपको मोर्गेज पे दे रखा है.
तो मेरे को जब पैसा का जरूरत पड़ेगा, यू आर गोइंग टू पे मी द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ द मनी. दैट इज कॉल्ड द promise that may involve the financial liability. The next point is it about the person giving the property interest in the mortgager. The person who is giving the property interest in the mortgager. Then the person receiving is the mortgagee. Agar if I am giving you the mortgage on a specific of my property, the person who is the owner of the property, who is giving the property as the mortgage is called the mortgager, and the person to whom the mortgage right is being given is called the mortgagee. Okay. Then what is the mortgage money? The money secured, that is the loan plus the interest, is called the mortgaged money. And the document of this transaction is called the mortgage deed. So let's understand these 4 points again in a clear manner. The first thing, what is a mortgager? What is a mortgagee? What is the mortgage money and what is the mortgage deed? The first thing about the what is a mortgager? The person who gives the interest in the property is called the mortgager. For example, I am the person who is giving you my land as a mortgage. Here I am the mortgager and you are the person who is receiving the mortgage from me of the specific land or the specific house. Then who are you? You are the mortgagee. So there is an agreement between me. I am the mortgager, you are the mortgagee. I am giving me my house as a mortgage, and you are taking my house as a mortgage. And there is a mutual understanding in between me and you that there is a specific loan amount that is being associated. For example, you have taken the loan or debt up to the amount of 1 lakh rupees from me, and you are promising that you are going to pay me back that 1 lakh rupees in the duration of the 2 years. So obviously in all kind of the debt there is the interest is being associated. For example, for the even you are taking loan from the bank, then you have to pay the interest also, right? So including the interest price, when we are calculating the whole amount, then we can see that, for example, the if the original loan amount is 1 lakh of the rupees, the interest will be up to 20 to 30,000 of the rupees. So how much amount the person has to pay at the end of the day? It is 1,20,000 of the rupees, right? So this whole amount of 1,20,000 of the rupees is called the mortgage money. The loan that is up to 1 lakh of the rupees plus the interest on the loan, that is 20,000 of the rupees. The whole amount, that is 1,20,000 rupees, is called the mortgage money. So the person who is the mortgager, who has taken the debt in exchange of the mortgage property, he has to pay for that specific property, or he has to pay for the specific amount of the debt he has taken, and the full amount of the mortgage money need to be paid. And what is it? What is the mortgage money? The loan plus the interest, the debt plus the interest. Whatever the amount of the debt has been taken, including the amount of the interest that is been associated, that is the whole amount the person has to pay. So the money secured, that is the loan plus the interest, is the mortgaged money. Then the document for the transaction is called the mortgage deed. Where there is a transaction, when there is a transaction is been present, right? And there is a deed between the parties, that is called the mortgage deed. There must be a written drafted document between the mortgager and the mortgagee. You know, there must be the presence of the drafted agreement between the parties, and that kind of the document, that kind of the agreement is called the mortgage deed. Got it? So this was all about the basic concept of the mortgage under section 58 of the TP Act 1882, in which we have discussed what is mortgager, what is mortgagee, what is mortgage deed, and what is mortgage money. This we have already discussed.
Then coming to the next part, there are different kinds of the mortgage. Let's understand it one by one. The first kind of the mortgage is called the simple mortgage. What does it mean? In this simple mortgage, what happens that the mortgager does not hand over the property, but the mortgagor promises to pay the mortgage money on a personal basis, and he agrees that if he fails to pay, the mortgagee can sell the property and recover the money from the sale. This is a very simple in nature. यहाँ पे क्या होता है, for example, there is a deal between you and me that you have paid me the amount of 1 lakh rupees just before I was telling you. And there is an agreement between you and me that I am going to pay you the amount of 1 lakh 20,000 of the rupees, that is the interest amount of the mortgage money. I am going to pay you the whole amount of the 1 lakh 20,000 of the rupees in the duration of 1 year. So here, before the termination of the time period that has been given for the repayment of the mortgage debt, before the completion or before the termination of this time period, I am not bound to pay you the whole amount of the money. Before that, I have to pay the amount before the duration that is being completed. Before the duration of how much? 1 year. The duration is 1 year over here, right? So here, until and unless the duration is being completed, even if I have mortgaged you my property, my home, or my land, or my house, I am not bound to I am not bound to sell it to you, or I am not bound to give the ownership of the property to you, because I will be the owner on the property until and unless I have the right on it. What is the agreement between you and me? That you are if I am unable to pay you, then only I am going to transfer the ownership and you will be able to sell the land or sell the house. But here, until and unless the time is there, the duration is being continuing. What is the duration? That has been 1 year. Until and unless the duration of 1 year is being continued, then up to that period of the time, up to the period of the 1 year, I have my all right to enjoy my own property in the very open manner. But yes, there is a condition. If if you are unable to pay the proper money, if I am unable to pay the whole amount of the mortgage debt, then you have all the right to sell the property. So here, the property is not been handed over. It has been just mortgaged. It has been just partially transferred. The ownership has not been transferred. It is just the partial transfer of the ownership has been done. But after the termination of the period, if the mortgage money has not been paid, the ownership will be automatically transferred, and the person who is called as the mortgagee, the person has the right to sell the property and recover the benefits that is associated from the property and recover own expenses, own losses that has been arised from the property itself. So this is called the concept of the simple mortgage. I hope you understood this. Coming to the next point, we are talking about mortgage by the conditional sale. What do you mean by the conditional sale? When before selling something, there is a condition is being associated. There is a condition is being attached. That is called the conditional sale. So when the mortgager pretends to sell the property but with the specific conditions. If the mortgager does not repay on time, the sale becomes final. Okay. The mortgager repays, the sale becomes invalid, and the buyer must return the property. Okay. So where in the second type of the mortgage, that is by mortgage by the conditional sale, where here what happens? The mortgager pretends to sell the property but with the specific condition. See, there is a difference between the simple mortgage and the
mortgage by the conditional sale. Usually, when the amount is or the debt amount is very less amount or a manageable amount, in that case, simple mortgage is being implemented. But when it is the kind of the mortgage which is very sensitive in nature, then this kind of the mortgage is being applied, and this is called the mortgage by the conditional sale. You know what happens here? When we're talking about the mortgage by the conditional sale, in that the mortgager pretends to sell the property but with the specific condition. Okay. So here the ownership on the partial in the simple mortgage, the ownership has not been at all transferred until the completion of the time period. जब तक जो ड्यूरेशन होता है ना 1 साल का, जब तक अगर वो 1 साल हुआ 2 साल हुआ एग्रीमेंट के हिसाब से, जब तक वो टाइम पीरियड खत्म नहीं होता ना तब तक सिंपल मॉर्गेज में ना ओनरशिप का ट्रांसफर नहीं होता है. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मॉर्गेज बाय द कंडीशनल सेल, याद रखिएगा वहां पे क्या होता है ना, ओनरशिप का पार्शियल ट्रांसफर हो जाता है. इट दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द मॉर्गेजर प्रिटेंड्स टू सेल. वो बेचता नहीं है बट वो प्रिटेंड करता है, दिखाता है कि आई एम गोइंग टू सेल द प्रॉपर्टी. अगर वो जो रिपेमेंट होता है ना वो टाइम पे नहीं होता है, देन सेल क्या हो जाता है, फाइनल हो जाता है. हमारा डील हुआ था कि आप 10 जनवरी तक पैसे को आपको पैसा रिपेमेंट करना है, आपने पेमेंट नहीं किया तो वहां पे क्या हुआ, when I didn't get my money I have right to sell the property. मेरे को पैसा नहीं मिला तो मैंने क्या किया, अपना जो सेल हुआ वो फाइनल कर दिया, मैंने वो प्रॉपर्टी बेच दिया, आपका प्रॉपर्टी बेच दिया. तो मैं किस कंडीशन में बेच सकता हूँ, जब मेरे पास पार्शियल ओनरशिप हो. तो when we are talking about the mortgage by the conditional sale, the condition over here is अगर यहाँ पे रीपेमेंट नहीं होता है then सेल फाइनल हो जाएगा, अगर यहाँ पे रीपेमेंट हो जाता है तो सेल डिसमिस हो जाता है. इफ द mortgager repays, अगर mortgager ने रीपेमेंट कर देता है then the sale becomes invalid. सेल क्या हो जाता है, इनवैलिड हो जाता है. एंड द बायर और द मोर्गेजी मस्ट रिटर्न द प्रॉपर्टी. बायर और मोर्गेजी को क्या करना पड़ता है, प्रॉपर्टी को रिटर्न करना पड़ता है. प्रॉपर्टी किसको बिलोंग कर रहा है, मोर्गेजर को. किसको दिया है, मोर्गेजी को. पार्शियल ओनरशिप किसके हाथ में है, मोर्गेजी के हाथ में. सो हियर द मोर्गेजी गेट्स द लायबिलिटी टू रिटर्न द प्रॉपर्टी टू द मोर्गेजर. अगर यहाँ पे मोर्गेजर ने रीपेमेंट सही टाइम पे कर देता है तो मोर्गेजी को सही टाइम पे उसी का पैसा वापस करना पड़ता है. सही टाइम पे उसी को अपना प्रॉपर्टी जो है वो वापस करना ही पड़ता है, राइट. मैंने अपना जमीन बंधक रख के मोर्गेज पे डाल के आपसे 30,000 रुपीज लिया था. मैंने 30,000 आपको पेमेंट कर दिया तो आपको भी फर्ज बनता है कि अगर मैंने आपको 30,000 दे दिया तो आप भी मुझे अपना प्रॉपर्टी वापस कर दोगे. मेरा जो जमीन था, मेरा जो घर था वो भी आप मुझे वापस कर दोगे. यू हैव ऑल राइट टू डू दैट, राइट. सो when we're talking about the mortgage by the conditional sale, okay, it means when the mortgager does not repay on the time the sale becomes final. Okay, अगर मोर्गेजर सही टाइम पे पेमेंट नहीं करता है तो सेल फाइनल हो जाता है, एंड अगर रिपेमेंट करता है तो सेल इनवैलिड हो जाता है, एंड द बायर और मोर्गेजी मस्ट रिटर्न द प्रॉपर्टी टू द मोर्गेजर. दिस इज कॉल्ड द मोर्गेज बाय द कंडीशनल सेल. उससे पहले हमने क्या पढ़ रहे थे, मोर्गेज द सिंपल मोर्गेज. तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द सिंपल मॉर्गेज एंड मॉर्गेज बाय द कंडीशनल सेल. क्या होता है, वहां पे ओनरशिप का ट्रांसफर तब तक नहीं होती जब तक ड्यूरेशन खत्म नहीं हो जाता, बट यहाँ पे शुरू से ही ओनरशिप का पार्शियल ट्रांसफर हो रखा होता है. एंड जब टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है इमीडिएटली सेल इंप्लीमेंटेड हो जाता है. गॉट इट. थर्ड इज कॉल्ड द usufructory mortgage. What is called the usufructory mortgage? The mortgagor gives possession of the property to the mortgagee and allows them to use the rents or profits from the property as interest on the loan or use them to repay the mortgage money. The mortgagee keeps possession until the mortgage is fully repaid. So ये ना usufructory mortgage थोड़ा सा अलग होता है. पहले हमने दो चीजें पढ़ा, सिंपल मॉर्गेज एंड मॉर्गेज बाय द कंडीशनल सेल. वहां पे क्या होता है,
कंडीशनल पे कंडीशन एसोसिएटेड होता है और सिंपल पे आपको रिपेमेंट करना पड़ता है, नहीं तो प्रॉपर्टी बचा जाएगा। बट वहां पे जो होता है ना, वहां पे आपको इंटरेस्ट के साथ मिला के पूरा मोर्गेज मनी किसको पेमेंट करना पड़ता है? मोर्गेजर को ही पेमेंट करना पड़ता है। एंड द mortgagee has no right to enjoy the property until and unless the time period has been completed. जब तक ड्यूरेशन खत्म ना हो जाए ना, मोर्गेजी का ये हक, ये राइट नहीं बनता टू एंजॉय द प्रॉपर्टी। मोर्गेजी के पास प्रॉपर्टी का राइट या प्रॉपर्टी का पार्शियल ओनरशिप रहता तो है, बट एंजॉयमेंट करने का राइट नहीं रहता है, ये याद रखिएगा। द mortgager when mortgages the property, he still has the right to enjoy his own property, बिकॉज यहाँ पे प्रॉपर्टी का ओनर वो तब तक है जब तक प्रॉपर्टी दूसरे किसी को नहीं बेचा गया है। सो हियर इन दिस काइंड ऑफ द ट्रांसफर, इन द काइंड ऑफ द simple mortgage and mortgage by the conditional sale, as we have understood, the mortgagee has no right to enjoy the property or to take any kind of the benefit from the property. But in the usufructory mortgage, the mortgagee has the right to enjoy the property which is given by the mortgager. एग्जाम्पल दे रही हूं, समझ जाइएगा। मेरे पास मेरा एक जमीन है, आई एम मोर्गेजिंग यू माई लैंड। मैंने अपने जमीन आपको मोर्गेज दे दिया। कितने पैसा लिया था मैंने आपसे? 50,000 ऑफ द रुपीज। मेरे जमीन में ना अच्छा मतलब जो चावल होता है अच्छा उगता है, तो यू हैव द राइट टू एंजॉय माई प्रॉपर्टी, मैंने बोल दिया। तो आपका आपका ये हक है, मेरे जमीन पे आप कल्टीवेशन करके पैसा कमा सकते हो। मान लो कि आपका 50,000 ऑफ द रुपीज, आप अगर मेरे जमीन में 2 साल तक मतलब ये जो फसल उगाएंगे तो आपका 50,000 ऑफ द रुपीज रिकवर हो जाएगा। देन एज एन इंटरेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी और द इंटरेस्ट ऑन द लोन, आइदर फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे 30 लाख का लोन लिया है, एक बहुत बड़ा अमाउंट लिया लिया है, तो उसका जो है ना मतलब ड्यूरेशन है ना, मैंने आपको बोला कि मैंने 5 साल में आपको वो पैसा वापस कर दूंगी। 30 लाख रुपीज है, सोचिए कितना बड़ा अमाउंट है। हर महीना उसी का जो मतलब इंटरेस्ट आता है वो 70,000 या 50,000 या 60,000 का उसी का इंटरेस्ट आता है। तो इतना बड़ा अमाउंट है 50,000 या 60,000 पर मंथ, आप उसी को कैसे रिकवर करेंगे? उसी के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि यू हैव mortgaged मी और वन ऑफ लैंड। आपने मुझे बोला कि देखिए मैं हर महीना ये जो 50,000 का इंटरेस्ट है मैं नहीं दे सकती, तो मेरा जो ये प्रॉपर्टी आपने मोर्गेज किया है ना, मेरा जो जमीन किया है ना, आप उस जमीन को यूज कर लो। या फिर मेरा कोई दूसरा घर है, मैं घर आपको दे रही हूँ 2 साल के लिए, यू कैन रेंट द प्रॉपर्टी, आप मेरा घर को रेंट पे लगा के वहां से पैसा कमा सकते हो। एंड बाकी का जो ओरिजिनल अमाउंट है ना 30 लाख रुपीज, वो मैं ग्रेजुअली 5 साल के अंदर रिपेमेंट कर दूंगी। बट ये जो 30,000 का जो हर महीना का जो लोन है ना, मतलब जो इंटरेस्ट है ना, वो आप रिकवर कर सकते हो फ्रॉम माई होम और फ्रॉम माई लैंड। मेरे जमीन पे आप चाहो तो कल्टीवेशन कर सकते हो, मेरे घर पे अगर आप चाहो तो मेरा घर को मतलब आप दूसरे किसी को रेंट पे देके वहां से पैसा ले सकते हो। इन द वे आई एम एबल टू रिकवर द इंटरेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। या फिर मैंने आपसे ऑल ओवर 50,000 रुपीज लिया है, मेरा एक घर है भुवनेश्वर पे, मैंने क्या बोला कि आप ये जो मेरा घर है ना उसी को 1 साल के लिए मोर्गेज पे ले जाओ। उसी घर में हर महीने का आपको 10,000 का रेंट मिलेगा। तो इस तरह देखा जाए कि अगर आप 5 महीने के लिए मेरे घर रेंट पे दे दोगे ना, आपका 50,000 ऑफ द रुपीज रिकवर हो जाएगा। देन यू टेक माई होम एज द as the mortgage property, and you can keep anyone as the tenant, and you can take money from that person, you can receive money from that person, you can recover your money. That is called the usufructory mortgage, जहाँ पे क्या होता है, the possession of the property to the mortgage is being transferred, प्रॉपर्टी का जो possession होता है ना वो ट्रांसफर हो जाता है, and the mortgagee has the specific right to enjoy the property. Got it?
So this is called the usufructory mortgage. The next portions about the English mortgage we are going to discuss in the next class. This is all for today guys. अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो मुझे. ओके.